So, hello. This session is based on IIT-JEE Advanced PYQs on binomial theorem. So, this is question number 1 for our Advanced 2010 का question है, paper 2 का question है. Let R is equals to 0 से 1, 0, 1, 10. Let AR, BR and CR denote respectively the coefficient of x to the power in the expansion of 1 plus x to the power 10, 1 plus x to the power 20 and 1 plus x to the power 30. Then sigma of R equals to this one is equals to. So basically we have to find AR, BR and AR because all other things B10, C10 is constant terms. तो सबसे पहले AR लिखते हैं. So AR can be written as coefficient of x to the power r in 1 plus x to the power 10. So this can be written as 10 CR. BR can be written as similarly 20 CR and CR can be written as 30 CR. So now the required expansion, summation is R is equals to 1 से लेकर के 10 and B10 is constant term. So B10 को अपन बाहर ले लेते हैं सिग्मा से. So this will comes out to be AR BR minus C10 constant है तो उसको बाहर ले लिया. R equals to 1 से लेकर के 10 and this will be AR का स्क्वायर. नाउ अगर हम इन दोनों समीशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें सो B10 सबसे पहले अपन इसको सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं. देन वी विल पुट इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज 1. इसको मैंने A पार्ट बोल दिया, इसको B पार्ट बोल दिया. दोनों सिग्मा को सॉल्व करते हैं. सो A पार्ट इज सिग्मा ऑफ AR BR दैट मींस 10 CR मल्टीप्लाई बाय 20 CR and R equals to 1 से लेकर के 10. Now this expression will become 10C1 and 20C1 and that 20C1 can be done as 20C90, right? And yeah, 20C90. Okay, 10CR को ही convert कर लेते हैं. So this will be 20C1 and this will be 10C9. Yeah, 10C1 also can be done as like this. So basically I am replacing R with 10 minus R. Yeah. No, now next term will be 10C8, 20C2, and next term will be 10C7, 20C3 और इस तरीके से चलते 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 ये एक्सप्रेशन पहुंच जाएगा 10C0, 20C10. Now we can say that this series is nothing but this series is representing the coefficient of x to the power 10 in the product of 1 plus x to the power 10 and 1 plus x to the power 20, because 1 plus x to the power 10 will become 10CR x to the power 10C0, then 10C1x plus 10C2x square, like this, right? And up to 10C10 x to the power 10. Now 1 plus x to the power 20 will become, this is 20C0 or 20C1x plus 20C2x square, like this. And here it will be 20C10 x to the power 10 up to 20C20 x to the power 20. So we can analyze this कि अगर हम 10C0 को 20C10 x to the power 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा. So basically this is nothing but x to the power 10 का कोफिशिएंट. Similarly जैसे अपन कंपेयर करें यहाँ पर 10C9 x to the power 9 होगा और इसको मैं 20C1x से मल्टीप्लाई करूं तो this is nothing but coefficient of x to the power 9, x to the power 10. So we can say that this is nothing but coefficient of x to the power 10 in 1 plus x to the power 10 multiplied by 1 plus x to the power 20, except which coefficient? यहाँ पर हमको कभी भी 20C0 नहीं मिल पाएगा. तो 20C0 मल्टीप्लाई बाय 10C10 वाला एक्सप्रेशन कभी नहीं मिल पाएगा, तो उसको अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो 20C10 मल्टीप्लाई बाय 10C0, like this.
So this is nothing but 1 plus x to the power 30. So this will become A part will be 30c10 minus 20c0 is 1, तो 30c10 minus 20c10. नाउ अगर अपन बी पार्ट पे फोकस करें तो बी पार्ट है सिग्मा ऑफ 10c r का होल स्क्वायर, राइट। अगेन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10, इसको भी थोड़ा सा अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखें, so this will become 10c r multiplied by 10c, and r also can be replaced by 10 minus r. So again we can see कि इन दोनों का समीशन tan फिक्स्ड है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in 1 plus x to the power 10 multiplied by 1 plus x to the power 10, except which coefficient, जब यहाँ पर r इक्वल्स टू अपन 0 रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 10 बन जाएगा, उसको छोड़कर बाकी सब एक्सेप्टेबल हैं। तो 10c0 multiplied by 10c10 like this. So this whole expression can be written as 20c 1 plus x to the power 10, right? 1 plus x to the power 10 and 10, that is 20c10 minus, and this expression will become minus 1. This is B part. Now put this whole situation in the actual equation. So actual equation was, yeah, this is B10. Let me change the color. B10, and this A part will be 30c10. 30c10 is nothing but I think c10. Yeah, c10 minus 20c10, which means B10, minus this whole expression is subtracted by c10 multiplied by 20c10, right? 20c10 is nothing but B10, and this will be minus 1, right? So this whole situation can be written as c10 b10 will cancel out, and this will be, I think we made the mistake. Yeah, this is 20c10 will be acceptable, yeah, but 10c0 sorry 10c10 and 20c0 will not be acceptable, yeah. So because when we will replace r equals to 0, this will become 10c10 and this will become 20c0, yeah. So this will be 20c0 and 10c10. So this will be 30c10 minus, this is 1, yeah. So this is c10 minus 1. So b10 c10 will cancel out, right? And minus b10 plus c10. So this will be c10 minus b10. And this is our answer. Okay. Now let's move on question number 2, which is coefficient of x to the power 11 in the expansion of 1 plus x square whole power 4, 1 plus x cube whole power 7, 1 plus x to the power 4 whole power 12. ये IIT-JEE 2014 का पेपर 2 का सवाल है। सो करते हैं सॉल्यूशन। यस, सो अगर x टू द पावर 11 अपन को देखना है तो एक बार मैं इन पूरे एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड जनरल टर्म के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को अपन लिख सकते हैं 4c_r1, 1 की पावर लगाने से कोई मतलब नहीं होगा, तो x टू द पावर 2r1, फिर मल्टीप्लाई में 7c_r2 and x to the power 3r2, next 12c_r3 x to the power 4r3. So this whole expression will become 4c_r1 multiplied by 7c_r2 multiplied by 12c_r3, right? This whole term will be the coefficient of
any variable term in the power of x, right? So x to the power 2r1 plus 3r2 plus 4r3. Now we want coefficient of x to the power 11. So this term should be 11. ये वाली term 11 के equal होनी चाहिए. Okay. So 2r1 plus 3r2 plus 4r3 should be 11. And we know very well कि r1 की वैल्यू 0 से 4 के बीच में ही लाई करेगी. r2 की वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक लाई करेगी. r3 की वैल्यू 0 से लेकर के 12 तक लाई करेगी. ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर मैं r3 की वैल्यू को 0 लेके चलता हूँ, तो r3 की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 2r1 प्लस 3r2 की वैल्यू 11 होनी चाहिए. नाउ अगर इसमें फर्दर अपन r2 की वैल्यू को क्या क्या पुट कर सकते हैं सो दैट कि 3r2 भी एक ऑड नंबर बने, बिकॉज ऑड जब ये इस साइड आएगा तो 11 माइनस 3r2 शुड बी इवन नंबर बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 2r1. तो 3r2 शुड बी odd number. तो 3r2 should be odd number. That means we can say r2 की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो r1 आ जाएगा 4. अगर फिर r2 की वैल्यू अगर अपन 3 रखते हैं, 2 रखने का कोई फायदा नहीं है, इवन बन जाएगा. तो ये 9 हो गया तो 2, तो r1 की वैल्यू आ गई 1. अगर फर्दर और रिप्लेस करेंगे तो फिर r1 की वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी. सो दीज केसेस आर रिजेक्टेड. तो यहाँ से अपने पास में दो सिचुएशन बनी. एक तो 4,1,0 r1 r2 r3 के फॉर्म में, एंड नेक्स्ट इज 1,3,0. ओके, ये तो हो गई r3 जब 0 लिया अपन ने. अगर r3 की वैल्यू को अपन 1 लेते हैं, इन दैट केस 2r1 प्लस 3r2 की वैल्यू 4 विच इज 7. अगेन ऑड नंबर है तो 3r2 शुड ऑल्सो बी ऑड नंबर. सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि r2 की वैल्यू अगर 1 लेते हैं सो r1 की वैल्यू 2 आ जाएगी. r2 की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो r1 की वैल्यू 2 होगी. r2 की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो कोई केस नहीं मिलेगा. तो यहाँ से सिर्फ अपन को एक केस ही मिल रहा है विच इज 2,1,1. नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें तो r3 की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ से 2r1 प्लस 3r2 बनेगा 4 2 8. दिस विल बी इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से अगर मैं r2 की वैल्यू को 1 लेता हूँ तो r1 अपने पास में 0 आ जाएगा. फर्दर कोई केस अपन को मिलने नहीं वाला है. और इससे आगे वैल्यू अगर अपन बढ़ाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी. 3 लेते हैं तो वो अपने आप में 4r3 12 हो जाएगा, नेगेटिव आने लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है. 0,1,2. तो वी हैव 4 केसेस which is r1 r2 r3 is equals to 410 comma 1 comma 3 comma 0 2 comma 1 comma 1 and 0 comma 1 comma 2. Now we know coefficient क्या था. 4c r1 coefficient was 4c r1 7c r2 12c r3. So this will become 4c4 7c1 12c0 plus 4c1 7c3 12c0. फिर 4c1 7c 4c2 7c1 and 12c1, and next is 4c0 7c1 and 12c2. So if we calculate this, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये तो 7 आ गया. Then 4 7 3 3 is 7 6 5 upon 6, so 35, right? 35 multiplied by 4, 140. 4c2 is 6. Yes, 6 multiplied by 7, 6 multiplied by 12, uh, 12. तो 72 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 490 एंड 14.
72 multiplied by 7. So 490 and 14. 5 not 4 आता है. Next 4C0 is 1. 7C1 is 7. 12C2 is 12 multiplied by 11. So 66. 66 multiplied by 7. 420 और 42. 462. 6 7 3 लास्ट डिजिट होना चाहिए कहीं पर आ रहा है. So 4 या कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 सॉरी 3 6 1 7 4 11 1 5 9 10 1. Yeah, this will be our answer. That means option C is correct. Okay.